Okay, so let's proceed ahead with the group discussion. This is GD session. You people are already aware about GD. You people are to others and you have to give your opinion. GD, what I'm going to check is your communication skill, how you can participate, how you can put your point to others, how you can listen to others, how you can introduce and how you can conclude. So those things I'm going to discuss with you, right? Let me give you the topic, which will also be coming on your screen. Topic is education necessary to be good citizen? Is education necessary? Is education necessary to be a good citizen? To be a good citizen. There is a topic and it was asked recently in one of the PSUs. So, is education necessary to be a good citizen? That is the topic. Okay, those who joined late, like Diksha, this is the topic. Is education necessary to be a good citizen? I hope everybody knows the topic. Topic is education necessary to be a good citizen? Okay, so I think now you can start the GD. Please go ahead. Hello friends, my name is Damodar Kalasne. Today our GD topic is education is necessary to be a good citizen. So my point of view is that the education is very necessary to be a good citizen, because to reside in a city we have to follow the rules and regulation of the rules and regulation and the norms which are given by the government. So I open the discussion for you all. I agree with Damodar. The person who are educated can identify what is actually good for human beings and also for government, and that will help him to also grow the economy of country. There are many examples from which we can learn that without education, a person can live his life, but without education, he cannot live his life in a civilized manner and a civilized way. Education is most important throughout the life, and there is no any age from which you can start learning education. There is no any age barrier or gender barrier, caste barrier. There should not be any, if there is any in our country. Diksha, your voice is not audible to us. Please unmute yourself. Each Rajkant, everybody unmute yourself. I am agree with all my friends. As भीमराव अंबेडकर says कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो मतलब हर नागरिक के अपने अधिकार के बारे में उसको मतलब पूरी तरह से जगा देता है. अगर किसी को अपनी अधिकार मतलब पूरे पूरे करना हो तो उसको सबसे पहले शिक्षा लेना परम जरूरी है. इसलिए हर नागरिक को चाहिए कि कम से कम, और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसे मतलब एक ऐसा मशीन है जिसको चलाने वाला चाहिए. ये बगैर शिक्षा के इसको अपने राइट को राजकांत व्हाट ही सेज बिकॉज़ मेनी ऑफ बगैर शिक्षा के नहीं चलाया जा सकता. इसलिए हमको लगता है कि संविधान का पूरा पूरा अपना अधिकार पाने के लिए हर नागरिक को सबसे पहले पूर्ण रूप से शिक्षित होना अनिवार्य है. Yes, I am agree with Rajkant. Yes, I agree. And there is some policies that the people should understand that will be helpful for them, but they are not known what are the governments taking initiative to help them.
So education is very important to know that policies. I would like to add something to Damodar's discussion that there were पहले ना 3 सिर्फ फंडामेंटल चीजें थी, रोटी कपड़ा और मकान. इसमें अब 2 और ऐड हो चुकी हैं. दैट वन अमंग देम इज एजुकेशन. और एजुकेशन डजंट मीन कि आपके पास कोई एक हायर डिग्री और बहुत हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए. इट्स जस्ट द बेसिक नीड टू लाइफ. आपको लिखना पढ़ना आना ही चाहिए. हमें लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले हर एजुकेशन का जो है ट्रांसपेरेंसी, तभी हम मतलब जनता के बीच में जा पाएंगे. हर एजुकेशन पूरे ट्रांसपेरेंट तभी हो पाएगा जब वो पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान देगा. साथ ही साथ उसके टर्म्स और कंडीशन को भी समझना अनिवार्य होगा उनके लिए. Guys, तभी वो I'm agree doubt आ with रहा you है. guys. I'm just saying, please listen me. I'm just got here. I'm saying that being a citizen, it's not about that that having a good knowledge and having all the principle and constitution knowledge. It's about human also. Like as a human, you need to care about the people also. You need to take the action against something wrong is happening. So all those things is not about that you have all the laws. You got to know all the laws. So certain times you have a some basic knowledge, like not necessary that to get into those laws and all. So Yes, those I'm लेकिन मैं agree with you, आपकी Diksha, बात से that लेकिन education is मैं एक not बात that necessary, that but it is required to be a good human being. Guys, I have a लेकिन doubt in mind. लेकिन पहले जमाने में लोग एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, तो क्या वो लोग अच्छे लोग नहीं थे? वो लोग एजुकेटेड ऐसे मतलब साइंस के फील्ड में नहीं थे, पर ऐसे तो थे जो उनके वेदास वगैरह थे, वो उसके लिए तो एजुकेटेड थे. नहीं, और बट लेकिन also हमने उनकी हिस्ट्री मॉरल एजुकेशन भी तो थी but उनके अंदर. हाँ, मॉरल एजुकेशन तो था मॉरल उनके एजुकेशन. पास. और शिक्षा जो है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि शिक्षा जो है विनम्रता लाती है. इसलिए हमें लगता है शिक्षा मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है. शिक्षा आज Basic हमेशा education हम अगर थी. देखा अपनी जाए, नैतिक लोगों को जहाँ शिक्षाओं पे से कहा जाए कि जहाँ आपको हॉर्न नहीं बजाना है और स्पीड स्लो करके चलाना है, वहीं पे लोग स्पीड ज्यादा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं. सो आई थिंक द एजुकेशन फॉर दैट पीपल इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग टू द अदर पर्सन. Also with the help of education, basic education, they will know about their fundamental rights and duties. Yes. करेक्ट. आई इसलिए टोटली उनको एग्री विद बेसिक हिमादय. शिक्षा तो एकदम जरूरी है. इसलिए भारत सरकार ने समय समय पर कई सारे प्रावधान लाए हैं, जैसे कई सारे संशोधन किए गए. और सर्व शिक्षा अभियान का यही एक मकसद था, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो है ये सबको प्रोवाइड किया जाए. एक बेसिक Also, इसलिए हमारे हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसे प्रोवाइड हमारे किया है if कि you're saying वंचित नहीं whatever the रखते. government is doing, sorry, yeah, गर्ल्स Good को भी evening to हमें all. एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके लिए This is Murli गवर्नमेंट ऑलरेडी speaking. स्कीम्स ला रही है. Hello. यस. Yes, see. yes. sorry, please. Yeah, someone is saying something. To promote education 82057. also provided वो Excuse me, your voice is not clear. Blue shirt. Yes, good evening to all. Yes, add your point. I am just joining this time. What topic I don't know. Education, I think policy. Education is necessary. Education Yes. is necessary to be a good citizen. वो चैट बॉक्स में Yes, लिखा yes, हुआ है. I agree with both of you, sir. But is necessary, compulsory, but not for life in education. But so many people are also living in great people, some reliance industry, some other people also is good living society. But in present situation, in education is compulsory citizenship. Why? Because ethical values is more important. मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री ज्ञान नहीं है. कि हम सही बात अगर है. कोई डिग्री हम पाले तो इससे शिक्षा का मतलब नहीं है. हम कितना समझते हैं, समझदारी का मतलब शिक्षा से कितना है. सही डिसीजन ले सकते हैं, सही कर सकते हैं अपने साथ और दूसरों के साथ, और किसी गलत होते हुए पे आवाज उठा सकते हैं. ये Yes, सब भी कि मॉरल आपको कोई So भी all खा those के फूल things, ना बना you are जाए. saying right. Hello. All those things only come when you get together. Please, your Right? discussion, So sir. Excuse me, one object. Please, discussion on only English. Okay. Okay, sure. okay, We will take we care are of right. that. We are all we are I trying. am in South Actually, I'm Indian. saying That's why I am telling.
Like Okay, okay. proper your Okay, proper sure, some sure. words also not understand. I samajhiye, but some words also not understand. That's why I'm Okay, It's understand. all okay. speak the We'll English consider that. only. Okay, we Yeah. continue. S- Okay, so for that thing you are saying right that education is necessary for a good citizen, but in starting when we are child, like so in starting the government are taking initiation because even some village and people are not ready to send their children to the school. So for that thing, if otherwise they don't get education, right? If they are in home and when they get together, they get to know the other people's perspective, other people's nature and their behavior, then they will get into situation, they will handle all those situations. For those things the people the government is taking initiation for. If That's they are why not the coming, government adds the fundamental duties and the fundamental rights, Article 21A and the Article 51A, that the fundamental duties of their parents to make their children educated from 6 to 14. but they don't know na, actually in some other area also they don't know the rights and knowledge all those things, but as an That is why initiative the education That's is why I'm saying that the that is why education is education is necessary in necessary there. to be a good citizen. yeah I think Yeah. education in our देखिए country is फर्स्ट थिंग also फर्स्ट not. सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा एक बेसिकली एक माध्यम है, एक अवेयरनेस का एक माध्यम है। और चूंकि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो पहले क्या था कि उनके पास जैसे भोजन नहीं होते, बगैर भोजन के कोई बच्चा कैसे पढ़ने जा सकता, इतनी अवेयरनेस उनके अंदर होती नहीं थी। इसलिए हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था तो की गई इसीलिए कि दैट इज कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कम से कम मुफ्त शिक्षा, और गार्जियन को जो है सो एक वो अधिकार, Add it to the बच्चे को fundamental. yeah अधिकार you देगा are कि right, गार्जियन की Right, I am व्यवस्था Raj. agree with you guys, yeah उनको actually शिक्षा that is why प्रदान government are कराए। initiative with the food also, they are giving you food, Midday they are meals. giving you some right, exactly, some Yes, clothes midday also, meals. bags also, all those requirement for the study they are giving us. But the thing is that parents are taking in some area also, that parents are taking, but still they don't have that in mind that they should send their children to the school, because of the money. Obviously they think that by taking their children to the work they get the good money, I but Yes, agree with it's Diksha. I agree with you. Because of this, there are many schemes implemented by the government, especially Delhi government. It's working on the sure. government schools to make there the fees is very less, and they are aiming to provide quality education to the students, Yeah. which directly indicates that education is really very necessary nowadays for each and every But one of one us. more one doubt is there. Yes, Yes. one Sure, more doubt. clear your doubt. Sir, our Indian education system is completely different to other countries. But our Indian education system also everything is biased system. But compared to Japan, others in child age to some creativity knowledge, some one standard to will start in repairing some watch, Sir, will here we are not open and fix it. talk about the creativity. Here we are only talking about to be a Creativity good not citizen. thinking levels. Child thinking No, levels is I think different compared to You are that type saying of right, you are education. saying The that one more, that type of yeah education is more important to our India. That's why this is all Indian institutes or education institutes are and commercial. That's why you'll come and 9 o'clock to 7 complete I your agree study. with you, But there but is you are no you saying improve. should be aware But about the my new opinion, initiatives. my It has been opinion made is Yes, compulsory yes. completely for Indian class education LKG to system is UKG It is. that the education and the teaching will be without books. There are Books. no, Yes. there yes, will be no Yes. books yes, in the yes, schools. Yes. Yes. yes, Yes. yes. yeah It is exactly been you are No implementing extra burden on the saying student. upgrading. difference into Yes. education Yes, system in different hello countries. guys. Yes sir. Yes. Uh, yes, I am agree with the South Indian guy that I think nowadays everyone is not lagging so much in education, and I consider that every child nowadays in school, they I think not much lagging now, but we should focus now on this point that how the education should consider all the development of child, all the perspective of the Yeah, exactly. You social. were saying that in creativity and art side, right? He Yes, was saying that the country are different because of their study. I mean, the criteria of study, because they are developing their children in the creativity and artistic mind. But you were saying right, even government are taking
the action for that thing also, but it will take some time. And Right, other yes. in apart from village, the city people, city parents who are already aware of all those things, they are taking it seriously, and people are like in just the girl already said to us that in LKG and UKG people are more with the other thing instead of books and all. So in this way, the children Guys, are getting educated. being an educated person and a literate देखिए person आजकल जो help है you to increase your mental, physical, Mental. social, as well as financial capabilities to a higher level. Once upon a time, I met somebody in train who doesn't have a knowledge of the Indian currency notes even. She was like, how many, this color note, I don't know which color, how much amount is this? Could you please return me 200 rupees from this 500 rupees? And So we are this seeing is the we lot of and we see totally the need to lot of avoid from people's our country. that where the government has restricted to not the throw the kachra here, but they are throwing it. So there is a part of an education that Actually, this is the thing that education can't फ्रेंड्स teach आई you. वांट That टू it's a ऐड वन वर्ड पॉइंट thinking. कि It's ऐसा your नहीं है कि thinking that लोग we इसके बारे need में to be अवेयर नहीं changed. हो पा Like रहे हैं people are saying, लोग आज but yeah, they know लोग about the आजकल Swachh some Bharat people are not mission. taking कई action, राज्य सरकार not taking action नो नो regarding knowing all those things. You wanted to नो say like that. पीपल्स आर नो For a person to be हाँ a good लोग जो है citizen, आजकल for a person to be a good लोग citizen, आजकल ज्यादा education is अवेयर हो must. रहे हैं आप लोग Yes, For I'm a agree with person to be a good for a person to be a good citizen, education is must. With the help of because education, a person would be able to know what is right or what is wrong. That what is right and what is wrong. If someone is abusing someone, if someone is animal abusing, educated person will help and complaint about that person. If he is not educated, कहाँ पे complaint करना है? वो आपस में ही लड़ झगड़ के वो लड़ाई बढ़ जाएगी. अगर एजुकेटेड पर्सन होगा तो उसको पता होगा कि कंप्लेंट कैसे करनी है, कैसे डेकोरम चलेगा. तो उसी से हमारे को पता एजुकेशन because से if a हमें सारे person आईपीसी धाराएं और सारे फंडामेंटल राइट्स और सारे the रूल्स एंड people are रेगुलेशन also educated in medical area I want also, that how to देखिए use, there आप even लोग they don't आईपीसी oh, धारा sorry. आप लोग आईपीसी धारा की बात करते हैं लेकिन आईपीसी धारा से आईपीसी धारा लगाने का जो है सो वो काम वो थानेदार का होता है और ये किसी थानेदार आम की आदमी बात के नहीं बस कर में रही हूँ. नहीं कई है बार हम ट्रेन कोर्ट में में टीटी अपने कुछ अधिकार भी को बोल देता है. हमें मालूम होनी चाहिए हमारे राइट्स की. 12 बजे के बाद वो हमें नहीं जगा सकते हैं. और जो बाकी के लोग हैं, कोई मिडिल बर्थ ओपन नहीं करते हैं. हमें हमारे राइट्स मालूम होने चाहिए कि सुबह 9 से रात yes को yes 10 yes बजे yes तक yes ये yes मिडिल बर्थ ओपन करने का कोई रूल नहीं है. अगर हमें नॉलेज नहीं yes होगी, yes अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हमें ये सब मालूम नहीं होगा, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे. और जिसकी वजह से हम अपनी और अपने आसपास वाले लोगों के साथ गलत होता हुआ देखेंगे और खुद के साथ भी गलत करेंगे. the uneducated people that they have don't know the what the government are taking stand for them. When they help the government, the nation will be grow up in the good manner. But because there is a lack of education, जहाँ तक अवेयरनेस फैलाने का काम है हर राज्य सरकार अपने 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 तरह से फैलाती है. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी और खास करके मल्टी डायमेंशनल माने सर्वांगीण विकास के लिए कई सरकारें कई तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं. जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है अभी कोई पेन योजना करके स्टार्ट की है जिससे बच्चों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दिया जा रहा है. उसी तरह राजस्थान सरकार ने जो है सो अभी वो राजीव गांधी ओलंपिक विलेज ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए. इससे जो है कई प्रकार की बातें हैं लेकिन इन सबों के बीच अगर लोगों के प्रति आज हर गवर्नमेंट अपने आप को जो है डिजिटल इंडिया के थ्रू जो है अपने आप को जोड़ रही है. अपने डाटा सेंटर से जो है मतलब सारी जानकारी प्रेषित कर रही है भाया ऑनलाइन. ये सब आजकल शिक्षा का ही तो एक प्रकार है कि लोग समझ पा रहे हैं और अपना भरपूर we see in the जो है toilet movie that the प्रयास भी कर रहे हैं. government are providing the toilets for them by investing their money, but the people not have the knowledge about that. So it is the education which is needed to know the certain kinds of the scheme. Also, guys, government is promoting education indirectly also. जो हमारे ओलंपिक गेम्स विनर हैं उनको डायरेक्टली वो किसी ना किसी पोस्ट पे असाइन कर रहे हैं. Education is not the only thing for you to be successful in life. We can have other things also, but
the basic education is totally important for everyone. Yes. It Yes, is that's between the all 6 right. to 14 that will At be least mentioned in the the education fundamental should be ध्यान like देना education. होगा। that they get to know that what देखिए is right. I mean, they And if what? someone is saying that, they should listen at least, and they should They listen should that be they able to should abide decide by what the is rules good for also. them and what is bad It for is them bad for and them. for their surrounding society and family. That's it. So From my that हमको nobody can लगता do the है fraud कि with them. exactly. लेकिन हम जो है सो वैश्विक रिपोर्ट पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जो वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, उसमें भारत की रैंकिंग एकदम 107. दयनीय थी। 107. 136 Yeah, it is 131 आउट ऑफ 146, आई थिंक Okay. 142 ऐसा ही कुछ, 131 आउट ऑफ 142। मतलब हमारे yeah, पास it's बहुत it's गरीबी, winner. हाँ, इसलिए हमें कई इस प्रकार की कई तरह की सुविधाएं चलानी होगी, ताकि बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट, इवनिंग का नाश्ता भी दिया जाए। तभी बच्चे ज्यादातर अट्रैक्ट होंगे। और सबसे पहले वो तब तक लोकतंत्र सशक्त नहीं हो सकता जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक नहीं हो पाएगा। Yes. Yes. मेरा ये मानना है। Yes. Yes. Totally agree with you, Raj. और लोकतंत्र गाइस को मैं यहाँ सशक्त एक बनाने पॉइंट के ऐड लिए करना चाहूंगा। एकदम जरूरी है कि हेलो शिक्षा गाइस, का होना। मैं यहाँ 1 एक minute, एक पॉइंट Redmi Note 5 yeah, हेलो 7 Pro please proceed. at point. हाँ, मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि Yes, हम please. जो एजुकेशन नेसेसरी एजुकेशन है वो टोटली हम स्कूल्स और कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं हो सकते। कॉलेजेस एंड स्कूल्स हमें सब कुछ चीज़ें नहीं सिखा सकती। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि कोई कचरा अगर हम बाहर गिरा है, डस्टबिन के बाहर गिरा रहा है, तो ये एक केवल अपना सोशल ऑब्जर्वेशन है, एथिकल एजुकेशन है, जो हमें परिवार और अपने आसपास के सोशल बिहेवियर्स के थ्रू लोगों से सीखनी चाहिए। तो हमें सही मुझे बात लगता है। है कि हमको देख लोगों को इस तरह से देखिए इनको सीखने के लिए इन ज़्यादा इन प्रेरित लॉज करना चाहिए, को न जो कि है स्कूल्स और फ्रेंड्स, So आई एम इन exactly टोटली सब the चीज़ों डिसाइड। में mind thinking. Yeah, इसको exactly. ऐड You are करने के saying लिए right. So you are saying right, and that is why I'm saying that ki people mind is also elaborate. Like with the time, the people should think about other thing, like how people are behaving, how the people's reaction toward the something. These are the very लेकिन important. It इसके should लिए not come from the हमारा education. ये मानना Sometimes है it कि comes with In इन the my चीजों education. को opinion, मनवाने के necessary लिए यस हमारे education पास doesn't only दीक्षा mean इन्फोर्सिंग दीक्षा learning कम है। जायसवाल, medical medical आई एम एग्री विद education. यू हमको It ऐसा should be that ethical, देखिए it should be इस social, बात से जो है, and it now should also include thinking all that the our moral schools and education and the moral things college that happens education should around us change, in daily but नो we life. are नो not focusing that how we can educate it from our एवरी social एवरीथिंग behavior सुनिए, सब कुछ जो है through our केवल शिक्षा से नहीं आ सकता है। families. हमारे We should हमारे consider हिसाब से all इसके these लिए points. Okay, okay, proceed. देखिए हमारे हिसाब से इसके लिए सब कुछ शिक्षा से ही केवल नहीं आ सकता। जब तक उसको जो जैसे नगर निगम वगैरह जो भी है कुछ ऐसा इन्फोर्सिंग, जैसे आजकल पटना में एक कार्यक्रम चल रहा है कि माला पहनाओ कार्यक्रम, जिसके तहत जो है जितने भी डस्टबिन पॉइंट थे वो सारे आजकल पूरे साफ हो चुके हैं। क्योंकि जब जिस भी लोग को कचरा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, उनको माला पहना करके मतलब उनकी बदतमीजी की जाती है, उनको एक विशेष तरह का मतलब व्यवहार किया जाता है। तो Sarcastic way हमारे में हिसाब से उनको ये hit सब किया चीजें जाता है। केवल शिक्षा का कारण नहीं हो सकती कि शिक्षा के वजह से ही वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा इसके लिए मूल महत्व में नहीं है, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से तैयार नहीं हो पाया है कि। और दूसरी बात है कि इन्फोर्सिंग जो हमारी जो एजेंसीज है, जैसे एज लाइक एज पुलिस, ऐसे हम स्वच्छता पुलिस भी हम बना सकते हैं, जो इस तरह का ध्यान रखें कि शिक्षा इसका माध्यम थोड़ी, शिक्षा थोड़ी कहते कि आप सड़क पर कचरा गिरा, नहीं ऐसा नहीं थोड़ी। अगर राजकांत, तो हम केवल आपसे डायरेक्शन को that डिसएग्री is फॉलो कर रहे करना। हैं। शिक्षा से ही पॉपुलेशन yeah बनती है और that पॉपुलेशन से ही कचरा फैलता है। तो शिक्षा नहीं होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी तो कचरा correctly भी the नहीं people फैलेगा। see you thoroughly. शिक्षा से I am पॉपुलेशन agree नहीं with you होता ना, guys that I'm saying शिक्षा that के it is बगैर also पॉपुलेशन depend होता है। upon the अगर शिक्षा individual हो thinking तो वो also. अपने Sorry, परिवार you को are am I सस्टेनेबल audible? डेवलपमेंट गोल के हिसाब से वो अपने सर्वांगीण विकास की ओर वो ध्यान लगाएंगे। मतलब वो अपनी हर जरूरत को पूरा करेंगे, अपने बच्चों को एक अच्छा विकास देने की कोशिश करेंगे अगर वो शिक्षित होंगे। चूंकि शिक्षा कम है इसलिए लोग परिवार नियोजन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सही, जिनके बिल्कुल सही उनके बात है। लिए आप तो जितने जितने इनडायरेक्टली ज्यादा स्वच्छता और शिक्षा चाहिए, का बिल्कुल लेना देना हम है। ये स्वच्छता शिक्षा और से शिक्षा ही का लेना देना नहीं, but लेकिन exactly परिवार it's नियोजन also और depend नागरिक upon नियोजन जैसे भी हैं शब्द, उनका पूरा पूरा लेना देना। Let's हाँ discuss it exactly now.
मेरे Things are interconnected with each other. I'm just saying that it also depend upon individual thinking. If you think correctly, if you behave surely, that the other people will see you and they will act according to you also. So it's also depend individual thinking as well as society. Society always comprise of all you people, right? So education as well as people's thinking and behavior is also important for a good citizenship. So you are trying to say we need to inculcate the moral education in that. Correct. Totally. Yeah. और Moral and ethical साथ ही साथ education हमको इस both. तरह के कई अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस साथ ही साथ हम जो है अगर सड़क पर फैलाएं या मतलब ऐसे ही किसी समाज किसी कम्युनिटी में फैलाएं, नगर निगम के द्वारा फैलाया जाए, हमको लगता है कि ये केवल शिक्षा नहीं, मतलब शिक्षा तो एक माध्यम है, इसके साथ साथ हम ऐसे कुछ इन्फोर्सिंग लॉ लाएंगे तब इन सब चीजों पर काबू पाया जाता है। शिक्षा लॉ आपको लाएंगे पर जानकार जनता बना उसको सकता है, समझेगी नहीं, तो लेकिन लॉस आप का कोई उसका मतलब नहीं है। फिर से इनडायरेक्टली आप शिक्षा पे बोल रहे हैं। लॉस सरकार ने बना दिए पर जनता है ही नहीं समझने वाली। जनता जब पढ़ी लिखी होगी तब तो लॉस समझेगी, तब तो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे ना वो लॉस, पेपर्स के उठ के आम जिंदगी में वो लॉस इन्फोर्स कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली शिक्षा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। दामोदर, you are on mute. Yeah. Please unmute yourself. Okay. So basic education is required for the people to know what the schemes are developing the government for them, so that the government can help them. No, To develop. it is not just the blaming the government that the government is not doing anything. Government are doing whatever in their hand, but the people are not understanding that what is helpful for them. So basic education is very किसी necessary. को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा कि लॉज नहीं बन रहे कुछ हैं नहीं कि होगा, वही इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं। हमें सब अपने बन रहा है, आप को लॉज सुधारना बन रहा है, सब बन रहा है। हमें ये आपको अपना सर्वे थोड़ा करना पड़ेगा अपग्रेड कि करना हमारी पड़ेगा। कॉलोनी में कितने लोग जो है लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है। आप आज की illiterate हैं। प्रेजेंट डेट में अपनी कॉलोनी में जाके देखोगे, कम से कम 10% पीपल आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, भले ही वो ओल्ड एज में बिलोंग करेंगे आज के डेट में, एटलीस्ट Old age एमपी में की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मतलब देखिए ऐसा आपका अभी ये टोटल मानना, इलिटरेसी नहीं हटी है अभी। देखिए केवल इलिटरेसी से ही मतलब सब कुछ बुरा होता है ऐसा नहीं है। कुछ चीजें लोगों के अपने समझदार, क्या मतलब लिटरेट लोग क्या कचरा नहीं फैलाते क्या? नो कुछ नो ऐसा है क्या? नो नो हमारा ये मानना है कि ये आप जो स्वच्छता का शिक्षा से ले रहे हैं, शिक्षा और स्वच्छता दोनों एक अलग अलग पहलू है। हालांकि ये सर्वांगीण विकास में दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ इस पर भी विचार करना जरूरी है कि केवल शिक्षा से स्वच्छता नहीं आ सकती, और शिक्षा वास्तविक में हमको स्वच्छता का ज्ञान देती है। बगैर स्वच्छता के हम शिक्षा नहीं पा सकते, और बगैर शिक्षा के हम स्वच्छता के बारे में ज्यादा बिल्कुल सही राजस्थान, मैं भी यही कह रही हूँ। स्वच्छता के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शिक्षा के बिना स्वच्छता और बाकी सारी चीजें नहीं लाई जा सकती। गवर्नमेंट से what my friend is saying that कि जब भी जो देखते हैं हम लोग कि जो भी गाड़ी से लोग घूमने जाते हैं, वो जो भी कचरा होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग लिटरेट हैं, वो लोग एजुकेटेड पीपल हैं, स्टिल वो लोग कचरा फैला रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे भी मैसेज लेने पड़ेंगे जिससे कि ये सब कम हो जाए। तो उसी के लिए उन्होंने बताया कि सार्केस्टिक वे में कोविड उनको सिचुएशन में भी सरकार ने बोला था कि सबको मास्क पहनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो पब्लिक प्लेसेस में जाते थे तब भी मास्क नहीं पहनते। तो वही चीज है ना, इट्स टोटली डिपेंड इंडिविजुअल थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके से बिहेव करना चाहते हो। एंड द बेसिक एजुकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर उससे भी बड़ी बात, अगर आपके आसपास के लोग एक सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करेंगे तो नहीं करेंगे, हाँ। खुद से ही अपने अंदर से मन करेगा कि हम भी एक ठीक। जब आपकी गाड़ी के 4 लोग बाहर कचरा नहीं फेंक रहे हैं, आपकी भी हिम्मत नहीं होगी कि गाड़ी के बाहर कचरा फेंक दो। अगर आपके साथ वाले मास्क लगा के जा रहे हैं कहीं भी, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप विदाउट मास्क ट्रेवल करें। Sometimes you need to warn them also, because in society if 8 people are there, 7 people are taking action, but 1 people are, we all 7 need to go and say to them that because of you people we are not able to succeed in these possible things. So sometimes and you all need are to survive take the warning also. Yeah. Yes, totally. Okay, so now और आपकी वजह से I'll give chance to each one of you to conclude the session one by one.
but the conclusion should be approximately 1 minute. So I start with Agrishi. Agrishi, conclude the entire session. Okay, guys, today's topic was, is education really necessary to be a good citizen? I agree with that, that education is necessary, but the education defined here doesn't only mean the numerical and the alphabetical education. It should also include ethical, social, moral education, which helps for the development of an individual as well as the society. So yes, education is very, very, very necessary for the development of a citizen as well as the nation. That's all from my side. Now we go to Himani. Sir, education. I would like to conclude. Education is necessary to be a good citizen. With the help of education, a person can identify his fundamental duties and rights, so that he can identify what is actually good for him or what is actually bad for him. Or also, government is also promoting to be basic education. Moral education is also a part of education in for this purpose. That's all about. Okay, now Rajkant. मैं इस बात से मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि शिक्षा एक अच्छे नागरिक बनने के लिए एकदम आवश्यक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का होना कानून को समझने के लिए एकदम जरूरी है। जैसे कि हमारे महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि संविधान एक मशीन है जिसको चलाने वाला शिक्षित होना अनिवार्य है। मतलब इसको चलाने के लिए एक शिक्षा का होना परम जरूरी है। और ऐसे ही हम जब भी अपने मतलब हर तरह की नीति को, सामाजिक नीति को, सरकार की बनाई गई नीति जो हमारे लिए कारगर होगी, तभी हम उसका हम पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। और हम अपने अधिकार को, मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को हम पूरी तरह से तभी समझ पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। और इसके लिए भी जो हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि शिक्षा एक बहुत जरूरी चीज है एक नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। Okay, now Diksha. Sir, I'm started to conclude that whole discussion, that the discussion is all about that the education is necessary for good citizen. So in the started, we all agree with the point that yeah, it is necessary that education needed for the children in school and college. And then we started that the ethical values and morals behavior is also important for individual person. And the one we have also discussed about that the creativity and or art and is also important in our education, so that which is very different from the other countries education system. So in all those terms and condition, we concluded that that education is very important, whether it is in education manner like knowing the laws and principle, and or yeah, in ethical manner. So in both the ways, if we get to know all those things, that we are able to a good citizen for a country. Thank you, sir. Okay, Damodar. Yes, sir. Our topic is education is necessary to be a good citizen. We have a very healthy discussion among ourselves, and there is a both conflicted point, so that there is a need of the basic education, not the about the numeric value alphabets, but there is the basic education needed for the person to know his rights, his fundamental duties towards his nation, so that he and also the nation can build in a great manner. So that's all from my side. Okay, so Redmi, what is your name? Redmi, can you unmute yourself? Okay, so I think everybody, yeah. Redmi, what is your name? Okay, I think everybody is concluded. So let me give you the marks first. Damodar, I'll give you 6.5. Rajkant, 6.4. Agrishi, 6.4. And sorry, Agrishi, 6.6. Himani, 6.3. Diksha, 6.3. Now, let me give you the feedback other than marks. Agrishi can speak, and she is speaking also, and your body gesture posture are active but informal. You know the meaning Sorry, of sir. that? Active Yes, totally. but informal. जैसे ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे कर लेंगे तो एक्टिव तो हैं लेकिन इनफॉर्मल हैं. फॉर्मल वे में you have to sit very straight, even online जब आप कर रहे हैं, you have to sit straight and you have to talk like this and you have to speak like this, something like that.
पीछे पीठ लगा के नहीं बैठना है. Sitting Sure. posture and everything should be good. Eye contacts, the way I'm communicating with you and all, it can be done, right? Rajkant, your gesture posture when you are not speaking and even during speaking are little lazy. जो gesture posture से feeling आ रहा है कि आप inert होके बैठे हुए हैं, कि आप जब बोलेंगे तो otherwise आप inertia में हैं. थोड़ा सा active mode में आना पड़ेगा राजकांत. नॉडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अपना बॉडी हैंड मूवमेंट्स वगैरह थोड़े से करने पड़ेंगे, सो दैट ऐसा लगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में. ग्रुप ऑफ पीपल में जब आप बैठे होंगे तो ऐसा लगेगा कि राजकांत इनर्ट होके बैठे हैं, एक्टिव मोड में नहीं है. सो यू आर नॉट लुकिंग लाइक इन एक्टिव मोड. दामोदर इज ओके, आई मीन ही इज पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो. बोल रहे हैं लेकिन दामोदर यू हैव टू स्पीक मोर, यू हैव टू पार्टिसिपेट मोर. And yes, active mode is okay, not a problem. You are participating and it is looking like you are actively involving yourself in that discussion also. Diksha, you can speak, your communication is good. Himani, your communication is good. Both of you have given some points, but unless until you are really visible, I'll not be in position to give you rest of the feedback. But yes, as far as talking is concerned, giving points is concerned, that is okay, but you need to enter more frequently in the discussion. As of now, that part is missing. You are speaking but not that frequently. And as I told you, GD and GT is most important part is not only speaking but also how you participate. So when you are talking to somebody, like you have to participate, otherwise also you have to be active in that particular mode also. This is also very much required. So this is all from my side, and 6.5 plus means Damodar and Agrishi are in that category. So you are towards the green zone. The others are not in red zone, but yes, you need to be towards the green zone. So try to immediately come within 2-3 GDs with me. Try to come more than 6.5, and 4-5 GDs try to come beyond 7. So if I start giving you 7 plus in out of 10, that means you are in the green zone and you will pass the GD. That is from my side, that is how it is. And 8 from my side is excellent. I give maximum 8 only, so that is excellent from my side. And 7 to 8 you are safe. That is how it is, right? 7.5 means nothing to worry. Next 1 month ke andar, even if you don't practice with me, you will clear that particular round if you score 7.5 plus. That is the meaning of it. So try to somewhere hit 7 to 7.5 after 4-5 GTs practice, right? So that's all from my side. Anything you want to ask or tell? And for this topic, yes, now if I talk about that, see, education necessary to be good citizen. So friends, topic for the discussion today given is education necessary to be good citizen? In my opinion, it is very interesting topic, thought provoking topic on which we should all discuss. Being from educated class, we may understand the topic and our perspective. So friends, before we start discussing, we should be very clear what do we mean by good citizen. And then we should know the difference between being necessary and being compulsory and being good. No doubt education helps to be good citizen, but if we say uneducated people are not good citizen, it may not be correct. So friends, let's first discuss what do we mean by good citizen. अभी गुड सिटीजन क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो दूसरों की केयर करे, जो कंट्री की सोचे. वो तो इलिटरेट भी हो सकते हैं, that can be there. So you are not to take any particular side कि education is necessary. Necessary is the word, necessary नहीं है वो actually. It is good. अगर है तो अच्छा है. Understand? Is educated man good or uneducated man good? What is the answer? First define what is goodness. First define what is goodness for you, right? Is educated man more, prone to get job or uneducated? Obviously education. Why? Because jobs की criteria होता है to have education. But goodness, badness, good citizen, bad citizen. So that goodness is a subjective term. Illiterate fellow can also be good citizen who do more for the society. Highly educated fellow thinking about himself, self-centered, may not be good citizen. Illiterate fellow thinking of the society, taking care of the people, he may be good citizen. So define good citizen first. Through this topic, I want to send you a message. Whenever subjective thing is given, please define that first. See the topic, dissect it, and wherever there's a need to define the things, that can become your first line. Friends, before we start discussing, we should tell what is the good citizen. That should become your punchline. So this is one of the ways. I'm giving you one trick, and there are so many such tricks in GDs. So whenever topic is given to you, if there is a term which you need to define, or if there is a term which is subjective, define it, ask it to first discuss on that, then only take GD forward. Otherwise don't. Otherwise entire GD will go in wrong direction. You will all start, no, educated fellow is a good citizen, you should be educated and all, unmindful of the fact what do you mean by good citizen. So first define that, and then you say, yes, education helps to become a good citizen, no doubt about that.
Education always helps. But if we say it is necessary or maybe it is compulsory, that is not true. That exactly is the reason. In Constitution of India, to become the minister or executive, prime minister, president, or governor, education is not mandatory. Education is not mentioned. Illiterate fellow can become prime minister of India. Illiterate can become president of India. But when it comes to judiciary, you need to have legal degree with you. Why? Because you need to read the constitution. Is prime minister supposed to read the constitution? No. Is president supposed to read the constitution? No. He needs to understand the constitution. And friends, give the example of ancient kings also. Let's talk about Akbar. It looks like he was not educated, but then he had a lot of knowledge about all the religion and religious tolerance. He was the example of religious tolerance. Now think of Aurangzeb. Aurangzeb was highly educated, but you think of a religiously so intolerant fellow. So we can always give these kind of examples. Some king and something. So examples really give, good this thing to your discussion. Think of examples. Think of your daily life example. Even if you say, friends, I know one old man in my village. He's totally illiterate, and he's the best citizen in my village. Helps everybody. Whenever there is a need, he will help everybody. He will guide students. He is full of wisdom, and whenever somebody is to take advice, they go to him and seek advice, though he is illiterate. He's a good citizen. So you give examples. Who stops you from giving examples? Start feeling the topic. Don't discuss for the sake of discussion. Observer uska bhi credit deta hai, right? So this is for this particular topic. And anything you want to ask or tell now? सर मुझे ये पूछना है कि जरूरी है क्या अगर हम किसी टॉपिक के फेवर में बात स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे डिस्कशन में हम फेवर में ही बातें करें? नहीं, बिल्कुल नहीं. Question. No. ठीक है. Why you are even talking? In fact, you should always be diplomatic. या सर मैंने बीच में क्वेश्चन किया था कि पुराने जमाने में क्या लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो गुड सिटीजन नहीं थे क्या? तो मैंने किया था. And in group discussion, you need not to develop the consensus. That is a group task. In GD, you may take your own stand and keep going in that direction. So at the conclusion, you can always say that we had this discussion. Though we could not reach consensus, many of the members were of the opinion that yes, it is necessary. Some members, including me, we were of the opinion that no, it is not necessary. You can be good citizen even if you are illiterate. You can always give that kind of conclusion. Sure. Baki rest is more you practice, better you will become. That is the mantra. Learn more. So there's so much content available on the YourPedia channel. Keep seeing that also, and at the same time keep participating in this also, right? सर हमें ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? ये जो YourPedia का GD GT मॉक इंटरव्यू का चैनल है ना एक, उसमें तुम जाओगे, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है. So YourPedia GD GT mock interview. That is what you will go on YouTube. And the moment you do that, there's a YouTube channel. There's a panel actually, GD panel, GT panel, and case study panel. So if it is a group discussion, this will be in the GD panel. बट सर कल का जो GT था 6 PM वो अभी क्या हो रहा है कि एक दिन में 6-6 7-7 हो रहे हैं, तो माय टीम इज नॉट इन पोजीशन टू एक्चुअली अपलोड इट. मेरे को तो ये लेके करना है ना, उनको एडिटिंग करना है. सो आई वाज टेकिंग द फॉलो अप फ्रॉम माय टीम. So she was saying, Manpreet was saying, sir, there's a lot of work actually which has come. So we are not in position to go for that pace. क्योंकि 8-10 घंटे का रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, उनको अपडेट एडिटिंग करने के लिए बहुत टाइम लग जा रहा है, राइट? ओके सर, मुझे एक और डाउट था. जीटी में अगर हमें जो केस स्टडी मिल रही है वो काफी बड़ी सी है, तो वो जो पेज रहेगा वो हमारे सामने पूरे टाइम रहेगा? आपको देते हैं वो पेज, दे गिव यू द पेज इंडिविजुअली सबको? यस. और एक ब्लैंक पेज और पेन भी? यस. Any other question? No. Take full benefit of YourPedia panel and team. You have more than what you can use, whether it is content or it is mentors. There are 7-6 mentors. You have less time, but service providing mentors and all these things are more. So you seek as much as possible, right, within the time available to you. सर मुझे अपने आप पे बहुत डाउट हो रहा था कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, will I be able to do it? तो ऐसा कोई इंडिया में बताओ जिसको 10 से ज्यादा दिन मिले हैं? अगर तुम्हें 10 मिले हैं तो बाकियों को भी 10 ही मिलेंगे. नहीं सर, मैंने ना थोड़ा पैनिक वे में रिजल्ट देखा था. रिजल्ट वाज आउट ऑफ 30th आई थिंक, और मैंने फर्स्ट को ईमेल चेक किया था. नहीं, don't worry. I tell you one mantra which I have learned from my all these years of experience. Only last couple of days matter.
and correct me if I'm wrong, only last couple of days matter. Yes. Baki, even if I give you 3 months, you will be relaxed, you will be Yes, only yes. when 15 days will be left, you guys will start putting effort. Otherwise, I keep on telling students, your rank in GATE is this much, you will surely get call from HPCL, IOCL, let's start preparing for GDGT. YourPedia has a dedicated group of, I think, more than 200 students who have very good ranks. They have taken our package long back for throughout the year. They never come for GDGT. They come only 10 days, 5 days before. Yes, sir. So it is not that if you have more time, you will start preparing more. It is only not this time. Be aggressive. Give your 10-15 days. We are technocrats. We are engineers. That is how we study. Only before one day, one night out, and will pass the marks. There's no Yes, sir. engineer who will study 1 week before. If it is there, you will say, what pagal you are. You will not do that. So one night before, we start preparing. Now for job, we start preparing 1 week before. That's it. So have confidence in you. You will surely crack it, right? Right. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you.